Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, that is culture, and today I will deliver its 7th lecture. So my dear students, in today's lecture, all the students will be able to identify the diverse cultural groups in Pakistan, living in Pakistan, and they will also be able to describe the cultural diversity of Pakistan, like religion, crafts, and language will be discussed in today's lecture. And the skills that will be developed in today's lecture are recognition, understanding, and analysis. So my dear students, let's quickly move towards the pre-reading question. Quickly answer a few questions. Which culture do you belong to? Very good. For example, I belong to Punjabi culture as I am living in Punjab. So I belong to Punjabi culture and I also follow the different norms of Punjabi culture. So have you seen any culture other than your own? क्या आपने अपने कल्चर के अलावा, आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं उसके अलावा क्या आपने कभी किसी और कल्चर को ऑब्जर्व किया है? Like I have observed many other cultures other than Punjabi culture. I have seen Pashtun culture, I have seen Balochi culture, Sindhi culture, and what the difference I found in those cultures is basically the language is different than mine. So my dear students, now is time for an activity. Identify religions with the help of pictures. अब मैं आपको different pictures दिखाऊंगी जिसमें लोग अपने religion को practice कर रहे हैं. आपको picture देख के guess करना है कि ये कौन सा religion है. You can see a church and a cross. This is Christians. Very good. Now here you've seen a man with a turban and a lot of men with the turban. This is Sikhism. Very good. And then a mosque and people are praying. This is Muslims. These are Muslims. And then a woman is worshipping in front of an idol. This is very good, Hinduism. So these are some cultural diversities that are also present in Pakistan. Now famous handicrafts of Pakistan. Pakistan में बहुत सारे जो crafts हैं मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस में बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स उनको कहता है, हाथ से बनाए जाने वाली अशिया हैं, वो भी बहुत मुख्तलिफ तरह की और बहुत ही डाइवर्स हैं. हर जो सूबा है उसके कल्चर के हिसाब से वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं. Here you can see this is अजरक and this is made specially in Sindh. And this is blue pottery और tile printing है. And this is embroidered bags and different clothes. I think this is Balochi culture. This is a topi, embroidered topi. This is Sindhi topi. Then there are different shawls, embroidered shawls, which are very famous in Kashmir. And truck art is extremely famous in Punjab. You can see this is truck art. A lot of paints and different colors are used to decorate the trucks. And this is a tokri. This is also handmade and this is also very famous in different provinces of Pakistan. This is blue pottery. This is famous in Multan. So my dear students, now let's quickly move towards the Islamic perspective. O people, we have created you from a male and a female and made you families and nations that you may know one another. The most honorable of you in the sight of Allah is the most pious of you. Allah is all knowing, all aware. So my dear students, Allah Ta'ala कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी जो पैदाइश है वो मर्द और औरत से जो है वो की है और इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ नेशंस में और कबीलों में जो है वो डिवाइड करके रखा है ताकि हम एक दूसरे को पहचानें और एक दूसरे के नज़दीक रहें. इसी तरह हम एक दूसरे की मदद करते हैं. सो बेशक हमारे दरमियान कितनी भी डाइवर्सिटी क्यों ना हो, हमें जो है वो एक दूसरे के जो है सब साथ हम रहते हैं तो कोई ना कोई हेल्प भी हमारी हो जाती है और ये जो है ये सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर है कि लोग मिलजुल कर रहें. So my dear students, I request you all to please open page number 24 in your SST 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Diverse cultural groups in Pakistan. There are 4 major cultural groups in Pakistan: Punjabi, Pashtun,
Sindhi, and Balochi. These groups have different cultures, including art and craft, food, language, clothing, festivals, famous events, and folk songs. So my dear students, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं, बेशक हम एक नेशन है बट स्टिल हम कल्चरली जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं. जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स और नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है. सो पाकिस्तान इज़ द डाइवर्स कल्चरल कंट्री. और पाकिस्तान में क्लोथिंग, लैंग्वेज, फूड, क्राफ्ट्स और इस वजह से जो है पाकिस्तान बहुत ही डाइवर्स है. डिफरेंट जो सूबे हैं उनके मुख्तलिफ जो है वो कल्चर्स और ये जो चीज़ें हैं वो हर जगह मुख्तलिफ है. So my dear students, today we will start with the religion that Pakistan is also very diverse in religions. Let's quickly read. Religion. There are different religions practiced in Pakistan. The religious group include Muslims, Hindus, Sikhs and Christians. The majority of people of Pakistan are Muslims. The Hindus mostly live in Sindh and Sikh in Punjab. All these people practice their religious rituals freely. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान जो है वो कल्चरली भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. यहाँ पर सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान के रहते हैं और अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करते हैं. सिंध की साइड पर ज़्यादातर जो है वो हिंदूज़ रहते हैं और वो वहाँ अपने मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं. वेयर एज इन ऑन द पंजाब साइड हेयर सिख जो है वो ज़्यादातर मोस्टली लिव हेयर एंड दे ऑल्सो प्रैक्टिस देयर रिलीजन वेरी फ्रीली. देन कम्स क्राफ्ट्स. Pakistan has diverse and rich crafts. The truck art of Pakistan is famous throughout the world. The trucks, lorries, and rickshaws in Pakistan are decorated with paints, art, poetry, and calligraphy. This art was originated in Punjab. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अगर बात करें तो ट्रक आर्ट की बात करते हैं. पाकिस्तान में ट्रक आर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ट्रक आर्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको मुख्तलिफ रंगों से, पेंट्स से और अक्सर बहुत सारे शेर लिखे हुए होते हैं और इसके अलावा कैलीग्राफी की हुई होती है बहुत ही खूबसूरत. तो इस तरीके से जो ट्रक्स, लॉरीज और रिक्शाज हैं उनको डेकोरेट किया जाता है. और ये सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब, पाकिस्तान. Furthermore, the blue pottery of Multan and Sindh are very famous. The artisans decorate cups, jars, and pots. They also made camel lamps and using camel skin. The traditional blankets are made by Sindhis. These quilts are very famous and are known as Rali quilts. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लू पोट्री जो है वो मुल्तान की बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुख्तलिफ जो पॉट्स, कप्स और यूटेंसिल्स होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है पेंट्स के साथ. और वो वाकई ही मैंने तो ओरिजिनल में देखी हुई है. आई ऑल्सो हैव अ डेकोरेशन पीस दैट इज़ ब्लू पोट्री और वो बहुत खूबसूरत वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में उसको डेकोरेट किया गया है. इसके अलावा कैमल जो स्किन है उससे कैमल लैम्प्स बनाए जाते हैं सिंध में. और सिंध में जो है वो जो क्विल्ट एक बनाया जाता है मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों को जोड़कर, उसको रली क्विल्ट कहा जाता है और ये दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है. The Changeris, Peshawari chappal and embroidered clothes are specialty of Khyber Pakhtunkhwa. The Balochi kadai is highly recommended all over Pakistan. People do embroidery on shawls, caps and waistcoats. Kashmiri shawls and embroidered shirts are famous in the world. So my dear students, this is the Changeri, जिसमें रोटी जो है वो रखी जाती है और ये खैबर पख्तूनख्वा में जो है इनको ज़्यादा बनाया जाता है. वैसे पंजाब में भी चंगेरी जो है वो हाथों से बनाई जाती है. आई हैव अ हाउस हेल्प, वो बहुत खूबसूरत चंगेरियाँ जो है वो बनाती है और वो हाथों से अपने खुद उनको डेकोरेट करती है. इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी चंगेरी, पेशावरी चप्पल जो है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है वहाँ की. और कश्मीर की जो है वो शॉल्स, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स दे आर वेरी फेमस. बलूचिस्तान की बलोची कढ़ाई जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है उस जैसी जो लजीज कढ़ाई है वो नहीं बनाई जाती, वो बलूचिस्तान की स्पेशलिटी है. तो हर सूबे की जो है वो अलग अलग क्राफ्ट्स के हिसाब से स्पेशलिटीज़ हैं और इस हिसाब से पाकिस्तान जो है क्राफ्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लैंग्वेज गिवन ऑन पेज नंबर 25. Language. There are dozens of languages spoken in Pakistan. The languages that people mostly speak are Urdu, Punjabi, Pashto, Sindhi and Balochi. Other than these languages, Saraiki, Gojri, Kashmiri, Hindko, Baruhi, Shina, Balti, Kohwar,
धातकी, हरियाणवी, मरवारी, वाकी एंड बुरसाखी लैंग्वेजेस आर ऑल्सो स्पोकन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अब आप ये देखें कि जो मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में वो पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बलोची ये लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा और भी हर इलाके की जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, इसके अलावा गुजरा के इलाका में गोजरी बोली जाती है, हिंदू कश के इलाके में हिंदको बोली जाती है, इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर शिना और बल्ती ज़बान जो है वो बोली जाती है। तो इस तरह से इलाकों के में भी बहुत सारी ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं और इनको सराइकी मुल्तान वाली साइड पर बोली जाती है। सो पाकिस्तान इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली डाइवर्स इन लैंग्वेजेस और पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन जो है वो दर्जन से ज़्यादा ज़बानें जो है वो बोली जाती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम कल्चरल डाइवर्सिटी में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम हेयर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रैक्टिस। फॉर प्रैक्टिस यू विल डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, you will write down your name and your class. Diverse cultural groups in Pakistan are discussed under discussion. So the questions, there are 3 questions that you can see on your screen. Number 1 is how many cultural groups are there in Pakistan? आप provinces के according जो है यहाँ पर cultural groups को mention करेंगे. Then name some religions practice in Pakistan. पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ religions practice होते हैं, write down their names. Then Pakistan has diverse and rich crafts. How? पाकिस्तान को कहा जाता है कि crafts wise it is very diverse. How? Write about different handicrafts in different provinces of Pakistan. Write about that in very briefly. इसको आपने लिखना है, do not go in detail. For example, you can write that in Punjab truck art is very famous, in Sindh Ralli and camel lamps are extremely famous, Kashmiri shawls are very famous, Balochi kadai is very famous. So according to the area you can write about the different handicrafts. So pause the video and complete this worksheet and submit it to your teacher. I hope you have finished this work. Now is the time for home activity. Home activity number 3. Name some famous crafts of Pakistan other than those mentioned in the book. अब पाकिस्तान के बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बुक में पढ़ा है. अदर देन दोज आपको कुछ क्राफ्ट्स के बारे में सर्च करनी है. यहाँ पे कुछ क्राफ्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने सर्च आउट किया. कार्पेट्स जो हैं वो बहुत फेमस है पाकिस्तान के, हैंडमेड कार्पेट्स. देन कम्स अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बनाए हुए घड़े जो हैं वो बहुत फेमस हैं. देन ग्लेज टाइल बहुत ज़्यादा फेमस है. कॉटन गारमेंट्स, हमने अजरक के बारे में तो पढ़ा था, बट कॉटन गारमेंट्स ऑफ पाकिस्तान आर एक्सट्रीमली फेमस. कैमल लैम्प्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. देन खुस्सा, मुल्तानी खुस्से जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. अभी आपने मुल्तान की पोट्री के बारे में, ब्लू पोट्री के बारे में पढ़ा, बट देयर खुस्साज आर ऑल्सो वेरी फेमस. पेशावरी चप्पल के बारे में वी आर डन. वुड कार्विंग्स, लकड़ी का काम बहुत ही खूबसूरत मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पाकिस्तान के किया जाता है. ख़ासतौर पे चिन्योट की साइड पर बहुत खूबसूरत जो है वो लकड़ी का काम और फर्नीचर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं. देन एथनिक ज्वेलरी यानी कि ट्रेडिशनल ज्वेलरी बहुत खूबसूरत पाकिस्तान में बनाई जाती है. मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ ज्वेलरी है और वो हर इलाके की उनकी स्पेशलिटी है. सो अदर देन द crafts discussed in the book, मैंने कुछ सर्च आउट किए हैं. there are on your screen. इसके भी अलावा बहुत सारे crafts हैं जो पाकिस्तान में किए जाते हैं. You can search for that, otherwise you can take help from here. So what have we learned today, my dear students? Pakistan's culture is diverse. Pakistan is famous all over the world for its colorful handicrafts. So my dear students, Pakistan का culture बहुत ज़्यादा diverse है, religiously, language wise, crafts wise, बहुत ही diversity है. So I hope you have understood about the cultural diversity in Pakistan. We have just done the first part of it. We will do the next in the next lecture. Until then, keep everybody around you safe. In the next lecture, we will discuss about the aspects of Pakistan, diverse cultures को भी हम discuss करेंगे. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.